Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Cantab Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Cantab Publishers. So get ready, my dear students. Dear students, we have finished the chapter about food and feedings. आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने डिटेल से पढ़ा फूड एंड फीडिंग्स, एनिमल्स एंड देयर डाइट, एनिमल्स टीथ एंड देयर फूड, बेसिक फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट, फैक्टर्स फॉर हेल्दी लिविंग. Just have a glance on this and then we will go towards exercise. आपने डिफरेंट हर्बीवोर्स पढ़े, carnivores पढ़े, omnivores पढ़े. You saw flat teeth, sharp teeth, and flat and sharp both together. After that, you have gone through this table also, the 5 groups of food, and after that we discussed about balanced diet also. Our balanced diet में you saw this table, a very interesting one. आपने डिटेल से देखा कौन सी खुराक कितनी हमें खानी चाहिए. This is the table given here in this book. After that, not only balanced diet but cleanliness is very important, rest and sleep important, and sufficient exercise is also important. Now we are going towards exercises, and this is your turn to do exercise. I'm just helping you. Choose the correct option against each statement. Number 1, animals that eat only grasses, plants, leaves and fruits are called कौन? Carnivores, omnivores या herbivores? बड़ा आसान है. Second one, sharp teeth are the characteristics of omnivores, carnivores or herbivores. Number 3, the food which contains all nutrients जो required है, proper diet, balanced diet या unbalanced diet. This is also very easy, my dear students. Number 4, lack of balanced diet cause, क्या कॉज करता है? डिजीज, या हमें स्ट्रॉन्ग करता है, या मेंटली बीमार करता है. नंबर 5, डेली एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, नॉजिया या मलेरिया. किस चीज के लिए एक्सरसाइज जरूरी है डेली बेसिस पे? फ्लैट टीथ आर सुटेबल, फ्लैट टीथ किसके होते हैं? प्लांट्स एंड लीव्स के लिए, मीट के लिए या वुड खाने के लिए. नंबर 7, अहमद इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डिफिशियंसी, व्हाट शुड ही इंक्लूड इन हिज डाइट? अगर प्रोटीन की कमी है उसको, तो किस खुराक से प्रोटीन मिलता है? वेजिटेबल से, ग्रेन से या मीट और एग्स से? सो यू हैव टू टेल मी. ओके. नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल? कौन सी चीज आपको इल कर सकती है? पिज्जा, फ्रूट और वेजिटेबल. कौन सी चीजें आपको ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए? नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट? यू हैव स्टडीड इन डिटेल. मीट में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल में होता है या ग्रेन्स में होता है? नंबर 10, आफ्टर डीप स्लीप हाउ डू वी फील? Tired, sleepy or active? It's quite easy. Going towards fill in the blanks, my dear students. There are, क्या है? Different eating habits of animals. कितने eating habits हैं? आपको मैंने डिटेल में बताया. All animals have, that is adopted to eating certain types of food. क्या है? Number 3, the science of food is called क्या? Nutrition. Number 4,
प्रॉपर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी कैसे दो किस्म की ताकतें देता है हमारी बॉडी को, क्या है वो बता दो. द प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप इज, कितने से कितने घंटे हैं, ऑलरेडी इज देयर इन योर बुक, वी हैव डिस्कस्ड इट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस. हाउ आर omnivores adapted to eat all kinds of foods? किस ताकत से वो सारी चीजों को खा सकते हैं? जी हां, टीथ की मदद से. कौन कौन से टीथ होते हैं? शार्प टीथ भी होते हैं, फ्लैट भी होते हैं. Enlist the basic food groups with examples. हमने ग्रुप्स पढ़े थे, डिटेल से आपको डिस्कस किया था. Define balanced diet, you have already done it. What are the harms of taking poor diets? Poor diet क्या होगा? आप कमजोर हो जाओगे, बीमारी आ जाएंगी और नुकसान होगा. Why is proper sleep and rest essential for healthy life? Yes, हमारी बॉडी ऑर्गन्स थक जाते हैं और उनको रेस्ट की जरूरत होती है. बट यू हैव टू राइट दीज आंसर टू दिस क्वेश्चंस. नाउ द लास्ट डी, कंप्लीट द फॉलोइंग बबल्स. प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं और डेयरी प्रोडक्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं. सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर होमवर्क to complete this exercise and then show to your parents. When you go to school, you will have done it, then you will feel quite energetic in your class. So best of luck, my dear students. Allah Hafiz.